4 MeV and the barrier was of 8 MeV. तो उस टाइम पे यही एक पैराडॉक्स था कि जब इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, हाउ इज इट एबल टू मूव आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द न्यूक्लियस which has these walls which are high enough to trap the particle. So that problem was solved using Schrödinger equation. Then I had compared the 3 or 4 cases we have done till now. उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर केस में, दैट इज इन केस ऑफ क्वांटम टनलिंग, हमने बाउंड्री कंडीशंस और पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट्स कंसिडर किया था. दैट वी हैड कंसिडर्ड एज 0 ओवर हियर. इट वाज 0, इट वाज V naught and it was again 0. और तीनों रीजन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैड रिटन द वेव फंक्शंस. फर्स्ट एंड थर्ड की कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑसिलेटिंग वेव फंक्शंस आए थे और सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन आया था. और इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास, क्योंकि कोई रिफ्लेक्शन पार्ट है नहीं इन द रीजन 3, देयरफॉर दिस वैल्यू वी हैड considered to be 0, and then this was what we had evaluated, the transmission coefficient, where we had considered the probability current corresponding to the transmitted beam and that of the incident wave function. तो हमारे पास यहाँ पे f star f over a star a आ गया था. Now corresponding to 3 wave functions, ये बाउंड्री कंडीशंस पे उनको कंपेयर किया गया और उनको इक्वेट किया था हमने. दैट इज psi1 इज इक्वल टू psi2 एंड del psi1 इज इक्वल टू del psi2 बाय del x. वहां से हमारे पास a b c d एंड f के बीच में कोरिलेशंस आ गए. वंस वी हैव द कोरिलेशंस भी, क्योंकि इसमें c और d था और इसमें f था, तो वी हैड इवैल्यूएटेड c एंड d in terms of f, and then we had evaluated A and B, which we had obtained in terms of C and D in terms of F. Okay, and once we have this, we can have the relation between A and F. So once we have the relation between A and F, जो यहाँ पे हमारे पास आया, this relation, फिर हमने कुछ यहाँ पे assumptions लगाई थी. One assumption was कि जो oscillating part है वो बहुत small है और K2 की जो वैल्यूज है हमारे पास, क्योंकि 2 एक्सप्रेशंस आ रहे हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है, एक में -k2 है, एक में प्लस k2 है. जहाँ पे प्लस k2 है, दैट एक्सपोनेंशियल विल बी क्वाइट लार्ज इन कंपैरिजन टू द एक्सपोनेंशियल विद -k2, और उनको कंपेयर करके वी हैड neglected one of the terms, that is that of e raised to power -k2. Okay, so finally we had obtained this expression, and after that substituting we had obtained the value of transmission coefficient, which is equal to this value. Okay, इसका जो मैंने आपको कहा था कि applications, एक और application use, मतलब that is quite significant, is that of tunnel diode. मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी. You can look into these things, and besides that, single electron transistors, I'm not sure if this is an application of tunneling only, but yes, the quantum phenomena are all seen in this case also, single electron transistors. So this you have to check whether it is check if it is an example of quantum tunneling. Now we'll do Ehrenfest theorem first, and then we'll move to 3D rigid box.
Okay. Ehrenfest theorem, it's significant or important. Its significance is that it provides a way to reproduce classical results. Classical equations of motion, we can say. So जिस तरह से हमने पहले बात की थी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की, कितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लाइक its energy, its momentum, force, all these values, they have a precise value in classical mechanics. Now, quantum mechanically, if we talk about it, they are represented by their expectation values. तो अगर हम कहें कि हमें न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करनी है, which is m2x m d2x by dt square is equal to p. Okay. Or we can say simple, this is the simplest thing, dx by dt, which is given in classical mechanics by p by m. That's in a way the expression for momentum. And similarly, we can say d by dt of p is equal to del p by del x. d by dt is dp by dt is f. Okay, जो हमने वैसे यहाँ पे भी लिखा था. मैम ये आपने फर्स्ट वाली कैसे लिखी है? फर्स्ट वाली गलत लिखी हुई है, यहाँ पी नहीं एफ ही आना है. Okay. So all these expressions which I have written in quantum mechanics, they will be given by these expressions. And we can write okay. ये अंदर ही आएगा. Now we are going to work with the simplest case, that is this one. Let's see if this relation we can obtain in quantum mechanics. So let's consider this first case, d by dt of x is equal to p by m. We'll be checking whether this is equal to this, okay? क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर बोला कि अगर क्लासिकली हम फिजिकल क्वांटिटीज इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्वांटम मैकेनिकली these will be represented by the expectation values. Now in case they are represented by the expectation values, can we reproduce the laws of classical mechanics also using the expectation values of the physical quantities? That's what we are going to check. And besides that, what we are going to get is the instrument for using quantum mechanics to understand or to reproduce the classical results also. So over here, let's consider the first term in the equation. That's given by d by dt of x. So as we all have done this thing, expectation value of x, that's given by psi star x psi dx.
and this expression can be written as del by del t of psi star x psi dx. Okay, we have taken the differential inside. So what we have over here is del psi star by del t times x times psi. So we are simply doing the differential by parts. Then we'll have del psi star by del t. Sorry. Psi star del x by del t into psi plus psi star x times del psi by del t times dx. Now once we have this expression, del by del t की वैल्यू हम वहां से लिख सकते हैं from the Schrödinger equation. इस particular case में this will be 0 as x is independent of t. तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ गई. हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट, उसमें था हमारे पास आई एच बार del psi by del t is equal to h psi. Okay, where h was p square by 2m plus vx. यही था. तो हमने इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहने दिया, that is h psi. So what we have is del psi by del t given by h over I h bar this thing. Okay, and similarly for del psi star by del t, we'll have minus h psi star over I h bar. So replacing these del psi star by del t by these values, we have 1 over I h bar h psi star into x into psi plus psi star x h psi over minus I h bar times dx. तो इस चीज को हम 1 by आई एच बार तो बाहर ही ले लेते हैं और अंदर हमारे पास हम एच साई स्टार को लिख सकते हैं साई स्टार एच ऑल्सो, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा दिस थिंग एंड ओवर हियर वील हैव साई स्टार. यहाँ नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे. जब मैंने डेल साई स्टार बाय डेल टी लिखा है ना, इस एक्सप्रेशन को वी कैन दिस पार्ट वी कैन राइट इट इन द अदर वे राउंड. यहीं पे वो करेक्शन कर लेते हैं. Okay. So that way things become more ordered. यहाँ पे भी इसका मतलब है जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटर है वो इधर से दूसरी तरफ चला जाता है, इसलिए यहाँ पे वी आर राइटिंग साई स्टार एच. तो यहाँ हमारे पास आ गया एक्स एच साई dx. So this whole expression becomes 1 over I h bar
psi star hx minus xh times psi dx. And this, as you know, this is the commutator hx times psi dx. ठीक है? कॉम्यूटेटर तो हमने किया ही हुआ है. Let's see what is the effect of commutator over here. यहाँ हमने लिखा है hx acting on psi, तो this is equal to xh psi, that will be, यहाँ हमारे पास आ गया del 2 by del x square plus v times x times psi minus x times del 2 by del x square plus v times psi. तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा, पहला फंक्शन कंसिडर किया तो that will be 0, del 2 by del x square of x, that will be 0. And when we consider the second function, इसको actually दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. x, okay, plus vx psi minus x times del 2 psi by del x square plus v psi x v psi. तो ये दोनों फंक्शंस तो सेम ही है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा. So we have these two terms cancelled out, and over here we'll have del by del x of, ये आ जाएगा psi plus the other will be x times del psi by del x minus x del 2 psi by del x square, and it becomes del psi by del x plus x del 2 psi by del x square minus ये 2 times आ जाएगा, क्योंकि when we differentiate it as the first function, it will be del psi by del x again. And so here we'll have twice del psi by minus x del 2 psi by del x square minus x del 2 psi by del x square. So these cancels out, and what you have over here is 2 del psi by del x. Okay, so if we substitute it over there, what we get is, यहाँ कहीं हमारे पास, ओके, एक टर्म मिस कर दी हमने, पूरे की बाहर ले लेते हैं. यहाँ आनी थी बच्चे, आप लोगों ने पॉइंट आउट ही नहीं किया. मैम ऊपर एक माइनस साइन भी आप समझाओगे, आपने मेरे साइन डिफरेंट आ रहे हैं. कहाँ पे? मैम जैसे इधर आपने डेल स्टार बाय डेल टी की वैल्यू आपने माइनस ऑफ डेल स्टार एच बाय आई टू एच बार लिया हुआ है. जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो आप माइनस नहीं ले रहे हो. अगर आपने कॉमन भी लिया तो भी बाहर एक माइनस आना चाहिए. यहाँ पे जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया है तो नेगेटिव साइन लिया है तो है बेटे. मैम आपने वो फर्स्ट टर्म में सब्स्टिट्यूट किया ना, डेल स्टार बाय डेल टी. ओके, या फर्स्ट टर्म में सब्स्टिट्यूट किया तो नेगेटिव एक्चुअली यहाँ आना है, यहाँ नहीं आना. यस मैम. और फिर अगर हम माइनस कॉमन ले तो बाहर को आना चाहिए, मतलब हाँ, इंटीग्रल से बाहर आना चाहिए माइनस. यहाँ आना चाहिए एक नेगेटिव साइन. यस मैम. दैट इज करेक्ट. हाँ जी, ठीक है, दिस इज फाइन, ऐसे ही आना चाहिए. यू आर करेक्ट. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट. थैंक यू मैम. और यहाँ पे
minus h bar square by 2m भी आना है. And similarly that will come over here also. Let me call this as, क्योंकि यहाँ लिखा तो जाएगा नहीं अब. Let this be C. So this is C over here. Finally you can work out this expression. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हर टर्म में आ रहा है तो फाइनल एक्सप्रेशन में आएगा h बार स्क्वायर बाय m. ठीक है, यहाँ आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि हमारे पास ये टर्म आ रही है ट्वाइस और यहाँ हमारे पास आएगा h बार स्क्वायर बाय 2m. तो ओवरऑल इट विल बी h बार स्क्वायर बाय m टाइम्स डेल साई बाय डेल x. तो अगर हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इन दिस एक्सप्रेशन, okay, so what we get is d by dt of x, what, file crashed, just a minute. I'm not sure if that part is saved. Okay, it's not saved. So what I can do is, yeah, ये आप लोगों के उसमें बुक्स में भी नहीं है, तो I'll send you this part of the work. मेरे पास जो नोट्स है मैं आपको वो भेज दूंगी, ठीक है. So what we were doing was Ehrenfest theorem. And we had just obtained the result dx by dt equal to, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था वो ये आया था, माइनस यहाँ हमारे पास आ गया था साई स्टार एच एक्स टाइम्स साई डी एक्स, एंड वी हैड इवैल्यूएटेड एच एक्स acting on psi as h bar square by 2m, sorry, h bar square by m del psi by del x. यहाँ पे हमारे पास था माइनस 1 बाय IH बार. IH बार ही आया था. हाँ जी बच्चे, अभी आपने किया था ना, नेगेटिव साइन था. मम्मी जो आप लास्ट वाला पूछ रहे हो, यस मैम यही है, सेम है. सेम है. यस मैम. ओके. तो यहाँ हमारे पास when we substitute this value we get dx by dt is equal to minus 1 by IH bar. यहाँ हमारे पास आ जाता है psi star into h bar square by m del psi by del x times dx, and this expression becomes IH bar into h bar square by m
I star del psi by del x dx. So what we get over here is this gets cancelled, and what we get here is 1 by m times integral psi star minus I h bar del by del x times psi dx. And this is the expression for expectation value of momentum. So we get this value. Okay. That's the result we have talked about. That is dx by dt is equal to p by n. Similarly, you can get the values for the other results जो हमने discuss किए थे. That is dp by dt is equal to expectation value of minus del p by del x. Okay. ठीक है बच्चे. Yes, ma'am. Okay. The next thing we are going to do today is a rigid box in 3 dimensions. So let's 3D rigid box. And in case of 3D rigid box, क्यों कर रहे हैं हम? जब 1D कर ही लिया तो 3D करने की जरूरत क्या है? When we consider it in 3 dimensions, we are led to a concept of degeneracy. बहुत सारी चीजें हैं. एक चीज मैंने पीछे आप लोगों को जो नहीं बताई है, अभी बहुत सारी चीजें हैं, जब बात कर रही हूँ तो दिमाग में आया. जब हमने रिजिड बॉक्स किया था, रिजिड बॉक्स के केस में हमने 1 डायमेंशन कंसिडर की थी, और वो 1 डायमेंशन भी हमने x की जो लिमिट्स कंसिडर की थी, दैट वाज बिटवीन 0 एंड l. अब अगर आप 0 to l छोड़ दो और उसकी जगह x ले लो बिटवीन -l/2 and +l/2, your results differ. Differ in what sense? It gives you better insight. जब आपने 0 to l लिया तो आपने उस केस में सिमेट्री कंसिडर नहीं की थी. ठीक है, एक लिमिट आपकी 0 to l/2 गई, एक लिमिट आपकी मतलब अगर आप मिडल कंसिडर करो तो वो दोनों के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक नहीं है. यहाँ पे जब हम x लाइन बिटवीन -l/2 एंड +l/2 करते हैं तो उसमें if you solve this problem, you have to solve this problem. If you solve this problem, what you obtain is कि different energy levels के corresponding जो wave function आते हैं, they may be an odd function or an even function. और वो odd and even behavior of the wave function जो आपको दिखता है, वो तब दिखता है जब आप ये केस कंसिडर करते हो. दैट इज जो दो आपकी बाउंड्रीज हैं वो आपके सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू दे आर सिमिलर, द वैल्यू इज सेम. वन गोइंग from one going to -l/2 and the other going to +l/2. Similarly, in going from 1D to 3D, the concept which comes up is that of degeneracy. तो जब हम डायमेंशंस इंक्रीज करते हैं तो डायमेंशनैलिटी इंक्रीज करने पे हमें बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं. सो इन अ वे वी कैन से 1 डायमेंशन इज द सिंपलेस्ट केस, 0 डायमेंशनल इज द एक्चुअली सिंपलेस्ट केस, पर उसमें ज्यादा कुछ नहीं पता चलता है. वी मूव टू 1 डायमेंशन, एंड एज वी मूव टू द हायर डायमेंशंस एंड इंट्रोड्यूस न्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स क्रिएट होते हैं या जो कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, they become we can say
they give you more insight or they give you more detail about the system under consideration. ठीक है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर आप एक पिक्चर क्लिक कर रहे हो, फोटो क्लिक कर रहे हो, अगर आप एग्जैक्टली सामने से क्लिक कर रहे हो तो आपको पार्शियल व्यू दिखता है. If you click large number of pictures from different angles, you get a better view. And that is again what you are seeing is in 2 dimensions. जब आपने सिर्फ एक साइड का क्लिक किया तो वो एक आप कह सकते हो कि एक ही डायमेंशन है, एक ही डायरेक्शन है जिसमें आप खींच रहे हो. Now if you switch to a movie, तो मूवी में आपको एक पर्सन की you can give complete imagery of that person from all sides. तो वो डिटेलिंग इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप एक सिंगल डायमेंशन से हायर डायमेंशन की तरफ मूव करते हो. एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर आल्सो. कॉन्सेप्ट सारे सेम हैं, जो हमने पहले यूज किए वही यूज होंगे. So over here what we are going to consider is a 3D cuboid. और इस 3D क्यूबॉइड में हमारे पास जैसे हमने रिजिड बॉक्स कंसिडर किया था वैसे ही यहाँ कंसिडर करेंगे. फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर्टिकुलर केस में हमारी डायमेंशनैलिटी इंक्रीज हो जाएगी. Here we have x, y, z. तो यहाँ हम कह रहे हैं कि it is only in this part that we have v is equal to 0 and particle is confined, and beyond these walls which are all of length L. But for generalization sake हम यहाँ पे L नहीं ले रहे हैं. Instead we are taking it as Lx, Ly. Sorry, this is Lx. This will be Ly, and this one will be Lz. Okay. So in this case, जो हमारा पोटेंशियल की वैल्यू है that is 0 for x, y and z lying between 0 to Lx, 0 to Ly and 0 to Lz. Okay. And infinity otherwise. Okay. यहाँ पे equal to नहीं आएगा because so it is simply these values. Okay. So we have these values. So particle is trapped just inside this box और इसके beyond सारी जगह potential infinitely high है तो वो कहीं move नहीं कर सकता है. Schrödinger equation इस केस में आ जाएगी हमारे पास. Again we are considering time independent Schrödinger equation और वो आएगी del 2 psi by del x square plus del 2 psi by del y square plus 2m over h bar square e psi is equal to 0. Okay. So इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था. This is the Schrödinger equation inside the box. Okay. इस पर्टिकुलर केस में अब जो हमारे पास साई है that's a function of x, y and z. ठीक है, तीनों वेरिएबल्स का फंक्शन है. तो क्योंकि इसमें पोटेंशियल तो 0 ही है और हमने कहा कि अगर पोटेंशियल x का फंक्शन है या
कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है सिर्फ, इन दैट केस वी कैन ऑलवेज एज्यूम द सॉल्यूशन टू बी समथिंग ऑफ दिस काइंड. जैसा कि हमने पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक यूज की थी. सॉल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड टू बी product of the three variables, that is capital X, Y, and Z. We are considering three functions x, y, z, which are functions of the lower x, y, z. तो यहाँ पे भी हम separation of variable technique use करेंगे, and that leads to equation. Over here we'll have yz del 2x by del x square plus xz del 2y by del y square plus xy del 2z by del z square plus 2me over h bar square xyz is equal to 0. Now if we divide whole of the equation, जैसे हमने separation technique use की थी for breaking down an equation in terms of x and t, similarly we'll be using it over here also. So if we divide the whole equation by x, y and z, what we get is 1 by x del 2x by del x square plus 1 by y del 2y by del y square plus 1 by z del 2z by del z square is equal to minus 2me over h bar square. Okay, now this is a constant, so it implies this should also be equal to some constant. Okay, now in case this is equal to some constant, let's consider it to be of this form: minus kx square minus ky square and क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास जब सिंपल श्रोडिंगर इक्वेशन थी तो उस केस में भी हमारे पास जो सॉल्यूशंस थे वो इसी फॉर्म के आते थे. Therefore we are considering a similar kind of solution. जो हमारी सबसे पहले रिजिड बॉक्स की श्रोडिंगर इक्वेशन थी, that was del 2 psi by del x square plus k square psi is equal to 0. That was what we had obtained. Okay, or we can say that was 1 by psi del 2 psi by del x square is equal to minus k square. So जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, we take the idea from that part. Over here also this kind of constants were considered because of the value of the constants or because of the kind of equation we had obtained for 1D Schrodinger equation. Okay, so let's consider one of it, that is this one, and what we get is del 2x by del x square is equal to minus kx square. So this gives us del 2x by del x square plus kx square x is equal to 0. तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आएगा just a second students.
Okay, so here we'll get the solution. X is equal to two by Lx sine of kx into x. Okay, where kx I by Lx. Okay, where nx is equal to 1, 2, and so on. Okay. Similarly, we'll get the solutions for y given by square root of 2ly sine of ky into y, and z is equal to square root of 2lz sine of kz times z. Okay, so the total solution becomes psi of xyz is equal to xx yy z z, and we have solution given by square root of 8 over Lx Ly Lz sine of kxx sine of kz z. अब ये तो हमारे पास आ गया. What about the ये आ गया जो हमारे पास, that is energy eigen function. For energy eigen value यहाँ हमने हमारे पास kx की ये वैल्यू आई है, और जो हमारे पास Nz, that will be यहाँ, if we look at this equation, जहाँ हमने assume किया था ये वाला part, 1 by x del 2x by del x square is minus kx square. So this we can obtain from kx square plus ky square plus kz square is equal to 2me times h bar square. तो यहाँ हमारे पास आ गया h bar square by 2m times kx square is given by nx square pi square over h bar square, यही Lx square. And similarly, here we'll have pi square over Ly square and z square pi square over Lz square. Okay, and from here we'll get it'll be pi square h bar square by 2n. And here we have nx square by Lx square and z square by Lz square. अब इस पर्टिकुलर केस में हमने Lx, Ly, Lz अलग अलग लिए हैं. In case we have Lx is equal to Ly is equal to Lz. What we get is E of nx, ny, nz is equal to pi square h bar square over 2m L square. यही एक्सप्रेशन था हमारा वहां पे भी in case of rigid box. Nc square. So that's the energy eigenvalue. इससे डीजेनरेसी कैसे आती है ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताती हूँ. Tomorrow, not tomorrow, Monday. Okay. Whether you can, what you can do from your end is, ये जो यहाँ पे हमारे पास nx, ny and nz आए हैं, they are called quantum numbers.
और डिजेनरेसी चेक करने के लिए what you can do is consider E11, इसकी एनर्जी चेक करो कितनी आती है, then you take E112, E211 and E121. सबकी एनर्जी सेम आएगी? What do you say? बोलो बच्चे. Yes, ma'am. So if the energies corresponding to a single state are coming out to be same, not single state, इनके corresponding states अलग अलग होंगी, but the value of energy will be same. So that means these states are degenerate. That is, they have the same energy corresponding to different states. तो उसमें भी जब आप हाइड्रोजन एटम में करते हो तो आपके p ऑर्बिटल में 6 सब शेल्स होते हैं, बट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज सेम एंड सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डिंग टू s सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स है पर उनकी एनर्जी सेम होती है. दैट्स व्हाई दोस एनर्जी स्टेट्स आर कॉल्ड डीजेनरेट. डीजेनरेशन तब जाती है एटम्स में जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं. वी गेट नॉन डीजेनरेट स्टेट्स because of splitting of energy levels. Okay, so this is the concept of degeneracy which is coming up from the 3-dimensional rigid box. अब I think सिर्फ एक चीज रह गई है, quantum applications. उसके बाद we'll be moving to solid state physics. And that is harmonic oscillator. Next lecture में I won't be doing more applications except for harmonic oscillator. उसमें हमारे harmonic oscillator will be more of qualitative than quantitative. It will take 15 to 20 minutes and बाकी के 40 minutes we'll be doing numericals related to whatever we have covered till now. Now we'll take a little break from doing the analytical work corresponding to applications of Schrödinger equation. Okay, so चाहे एक lecture चाहे 2 lectures we'll put up for the numerical kind or the problems which give you more insight into the analytical calculations we have done. ठीक है, so next 2 lectures will be devoted to that. Okay, Vijay. That's all for today. See you on Monday.